एक जगह कॉफी पीने के लिए बैठा हूँ बस। हाँ, हेलो जी, नमस्ते। Where does the poop go? Really? एक जगह If कॉफी someone's पीने backed के up लिए and बैठा हूँ बस। constipated for 2-3 days or even a week, where does it all go? कहीं से कोई आवाज आ रही है क्या? अरे, we'll just give a couple of more minutes at 7. सर ये लो जी राव जी सर मुझे ये बैकग्राउंड भेज दीजिए ना, ये बैकग्राउंड आपने भेजा नहीं मुझे। I'm just Hello? trying to get Sanjeev ji. Just let me give. हाँ वो बैकग्राउंड भेज देते तो मैं भी लगा लेता। हाँ मैं भी लगा लेता ये बैकग्राउंड या फिर रहने दीजिए, टाइम हो चुका है। Hello, Jiraj. Sanjeev ji is actually traveling. As far as I know, he has to catch a train at 8 p.m. I don't know whether he will be able to participate. Did he confirm? Yellow ji, you are on mute. Rajesh, you are saying something to me. Please come again. Actually, I said that Sanjeev Sharma ji is traveling by 8 p.m. train, so he must be in transit. So Oh, I don't see. know. Okay. He has some emergency travel plan. Just came up today. I don't know whether he has informed you or not. But this is what I. Okay. I didn't get any update from him. That is okay. So we will have your permission to conduct the program in the absence of chair. Is that okay, Rajesh ji? Yeah, you can chair. Okay. Sorry. Okay. Namaste, sir. Good evening, everyone. Namaste. Was the sharing coming through earlier? Yeah. Okay. India needs a thali revolution. A colorful thali full of variety of food items can do wonders in our lives. This is the Uttam Aahaar which could lead to Uttam Vichar. So, here comes the Aahaar Kranti for the well-being of each one of us. We all need nutrition. An early childhood needs nutrition investment. It all begins even before the birth of a child, when we take care of a would-be mom. A healthy child develops into a healthy adult and in turn has a healthy aging.
but we don't know what should we eat and how much. So, let's understand the concept of Uttam Aahaar. A human body needs me the most. No, I am the most important in the food plate. We fulfill the major needs of anybody. You all are sadly mistaken. I am the best and needed the most. Everyone blames me for their bad shape, but without me, none of you can be cooked or made worth eating. We are not counted as main food, but give energy almost equivalent to what you people give. I give all the energy to children. Hey, stop this fight. You all are the best and needed by the body. It's a teamwork. We all make the balanced diet, which has the extraordinary healing powers and can do miracles for our body. All these efforts are just to make you aware how important these food groups are as a whole, and also to bring the Thali revolution in our lives. This revolution will educate us to eat Uttam Aahaar, which will ultimately lead to Uttam Vichar. नमस्कार। अभियान की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर मैं मानवर्धन कंठ आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वागत उन तमाम महान भावों का भी जो आज इस वैज्ञानिक में अपना भूमिका निभाया है। Manbardhanji is traveling. Probably his voice is not coming through clearly. जो आज के इस वैज्ञानिक अनुष्ठान में अपनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी का, जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव हैं। आपको नमस्कार करता हूं सर। हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, उसके अलावा जो इस पूरे अभियान के जो मार्गदर्शक हैं येलोजी राव जी, मिरजकर जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत करना चाहता हूं येलो राव जी। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर रश्मि कुलकर्णी जी, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। रश्मि जी नमस्कार आपका और अभिनंदन। आप आज के पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका भी परिचय मैं करना चाहूंगा। नेशनल आयुर्वेद स्टूडेंट्स एंड यूथ एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट वैद्य प्रशांत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आईपेन इंडिया की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर मानसी पाटिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है एमपीसीएसटी की साइंटिफिक ऑफिसर सुश्री साक्षी भारद्वाज। आप सभी महान भावों का मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार भूखमरी को चुनौती देने के लिए हरित क्रांति और ग्रामीण भारत में दुग्ध उत्पादन की अनूठी मिसाल के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी तरह आज से 2 साल पहले कुपोषण को हराने के लिए एक अनूठी पहल हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत सरकार के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने विज्ञान भारत फोरम, प्रभास और विज्ञान प्रसार के सहयोग से शुरू की गई आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार का शुभारंभ किया था। सकारात्मक पोषण के बारे में जन जागरूकता पैदा कर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। आइए आहार क्रांति अभियान के अब तक के सफर के बारे में जानते हैं इस अभियान की लीड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि बंसल जी से।
डॉक्टर रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आप इस अभियान के बारे में सभी दर्शकों को बताएं। बहुत स्वागत डॉक्टर रश्मि बंसी। धन्यवाद। Namaste. So I'll just give a brief introduction about myself. And I am Rashmi Kulkarni. I have a PhD in molecular genetics. I am director and co-founder of Aahaar GenNext Solutions Private Limited, which is a 360 degrees microbiome resource platform. I do outreach programs for students and about the microbiome, nutrition, and long-term health. At the Global Indian Scientists and Technocrats Forum, I'm the coordinator for Aahaar Kranti, the nutritional awareness and solutions campaign that I'm going to talk about in just a few seconds. So this is my brief introduction. Now, let me share the slides myself to give you an experience of what Aahaar Kranti actually is. So here I'm going to introduce everybody briefly to Aahaar Kranti, which is Uttam Aahaar, Uttam Vichar. And most of you already know about Aahaar Kranti. It is one idea, unique solutions, a nationwide nutrition revolution. Now, as you look at this image, there's a banana leaf with so many dishes on it. What I want you to do is close your eyes. Just take this image in your mind and close your eyes. Visualize yourself in your native village. Hear the sounds of a stream flowing nearby. You're sitting cross-legged in your rustic home with your grandparents, with your parents, cousins, loved ones, in a large joint family. Food that was freshly harvested is now freshly prepared, served lovingly on a banana leaf, piping hot. It has all the 6 flavors that we need to satisfy not just our tongue, but also to fulfill what our soul, our mind needs. All the 6 flavors, including salty, sour, astringent, bitter. We have spicy and we have sweet. There is a wide variety of food. There are pickles, there are fermented foods. There's a wide diversity of ancient grains, fruits, vegetables, in wonderful combinations that are on the plate, that are on this banana leaf. It is a fully balanced meal that you are looking at. And as you extend your hands to take in the first bite of that rice, the warm rice with dal, a dollop of ghee melting on it, as you take in that bite and enjoy the wholesome taste of it, gently, with a smile, open your eyes. We are here in a very sterile grocery store with food that is in boxes. We are navigating a cart, a shopping cart, looking at food that is packaged, that was probably harvested months or a year ago. We have no idea where it came from. We have to actually read the labels and go through all of this. How did we reach from that wholesome experience that we just saw to this? So when we talk about us as being humans, we are looking at humans as the body, mind, soul, the entire environment around us, our microbiome, the invisible organ that we have,
But instead, what has happened from that wonderful experience to what you just saw on the previous slide, we have come to a stage where we have modularized everything, including who we are. The thing that we think of ourselves is our organs. Just like the food has become modular, we think of ourselves as a bunch of organs that are working together. Everything in our lives is modular, including the food that we eat. The wonderfully balanced thali that we just saw and enjoyed has become the scale of balanced nutrition that has been subdivided chemically into fats, proteins, carbohydrates, vitamins, minerals, trace elements. There is no mention of spices here. And it makes up what is now called the food pyramid that we learn about in schools, colleges, and everywhere. Does that include anything that a vegetarian can eat without the inclusion of meat? What about the vegan diet? What about spices? What about the wholesomeness of food that actually soothes the mind and body? Instead, we are talking about all of these modular compartments that we learn about. And what exactly happens during the implementation? This is all relegated to the history books. And our food looks like this: extremely low complexity, high starch, that is not even giving us any kind of nutrition that we can talk about. And what does malnourishment actually look like? Does this mean unaffordability of food? Or does this mean over affordability of food? What does malnourishment actually look like? Now, while we are staring at both of these, what has happened when we traveled from that wonderful experience to the supermarkets that we just saw? The food production in India, while has increased significantly due to the Green Revolution or Harit Kranti, we are actually producing 4 times more calories than what we consume. But as I mentioned, calories, it's a thing that we are measuring as energy units. Here we will see that the amount of food that is being made is largely starch heavy. Now, what has happened is the amount of fruits and vegetables and other things that our diet needs has significantly gone down. There is also a loss of millets or ancient grains that are very hardy, that are grown in poor soil conditions, even in very less water, in extreme temperatures. And these were the kind of foods or grains that our ancestors were actually eating. These are the highly nutritious foods that we or our ancestors were used to. Instead of that, we have moved to a very starch-heavy, wheat and rice-heavy diet, losing our focus on millets. It is very heartening to see the kind of efforts the government is putting in now to bring back millets in a big way. So as we talk about this kind of a transition from the ancient wholesome diet to a very modularization, starch heavy, we have seen this slide many times before. There is an increase in the dietary risk for diseases and deaths due to all of these diseases that are significantly going up at a very, very scary rate. And the diseases that are caused by dietary risk, some of them cardiovascular diseases, diabetes, kidney disease, cancers, tumors, they're increasing at a very, very scary rate just because of poor choices of food. Previously, Green Revolution or Harit Kranti has saved millions of lives by making sure that people were not starving. Then came the White Revolution, which led to improved health and economic growth. It is high time we bring in a pink revolution or Aahaar Kranti that was launched 2 years ago in order to balance everything out, to bring about a balance in nutrition. This is what we mean by a national campaign for better awareness and solutions, where we are going to balance out all of this nutrition back where we started from. And in this, Bharat can serve as a role model or become a Vishwa Guru for the whole world. This was launched 2 years ago on the day of Varsh Pratipada, 13th April, by Dr. Harshvardhan, then Union Minister of Health and Family Welfare. So after we launched Aahaar Kranti, what we did initially was look at a lot of scientific literature, would bring in everything that is known from ancient traditions, from the recent scientific knowledge that we have that is already published. We made these wonderful educational modules. So there are many, many team members that I can't even name right now. There are just so many who have put in amazing efforts in making these educational modules for all of the age groups that you are seeing on the screen, right from embryo
to elderly. We are focusing on all of the age groups, the nutritional gaps that are present for each of these age groups. Because as you might know, nutrition is very specific for every age group. What are the gaps in nutrition and what can we do to resolve them? So these were the things that were done very early on. And these rich modules were already verified. And we had a lot of wonderful feedback. These were used for training or train the trainer program in many partnering institutions. For example, last year we had some train the trainer programs with Thakur Institute of Management Studies, KSRDPU, and previously we had that the same thing with Shakti, with Shiksha Shilpi, a teachers training organization. We had that at SPPU University in Pune. So while we did that, we also thought that it is important to bring this kind of knowledge in many different formats, because people are very social media savvy. They get information on social media in many, many different formats. So for that, we had presented 20 different projects, because just giving awareness is not enough. For people who cannot afford food or cannot find the right kind of food, we need to bring in solutions. So for that, these are the 6 main projects that we have focused on in the past 1 year, which was to bring the right kind of information in the curriculum itself, in coordination with NCERT, to make nutritional awareness videos that when people see, they can easily figure out what the gaps are. It's a very general or layman kind of a language that these videos will be made in. There are awareness campaigns about nutrition that we are constantly doing to improve the awareness for the right kind of information backed by scientific literature. Then we have nutritional support groups, where we encourage people to look at different seasonal foods, local foods, spices, and they get daily reminders about what kind of food they should be eating. And all of this information will be published in a manner where we can show that, yes, these things are working to change the kind of nutrition that people select. We also have wonderful new educational apps that are being built so that people who want or like to choose apps as a mode of educating themselves, they can use it. These will be done in regional languages also. We have a wonderful project that is focusing on traditional fermented foods, where we are collating on all of the information that we can figure out of traditional foods and popularize all of these. So these are the 6 projects that were mainly focused on. We were trying to build teams for all of these for Aahaar Kranti. Now I will end the talk saying that we have 2 other verticals, the education vertical in GIST. We have the agriculture vertical in GIST, which have been very amazing, very supportive collaborators. Internally, we do a lot of brainstorming together, and a lot of these projects will be done in coordination. There are also the external partners that we have signed MOUs with or are in the process of signing. So nothing is done without teamwork. This is how Aahaar Kranti is going to be taken forward. With that, I would like to end the talk. Thank you so much and stay safe. Thanks a lot, Dr. Rashmi Kulkarni ji, for such an inspiring talk. And now it's time for panel discussion, and it's my privilege to introduce our panelists. National Executive Member of IPAN India, Dr. Mansi Patil, Scientific Officer MPCST, Ms. Sakshi Bharadwaj, and Vaidya Prashant Tiwari ji, who is the National President of National Ayurveda Students and Youth Association. Yeah, Dr. Mansi Patil, please go ahead. Thank you for the platform and a wonderful initiative that we have here today. Should I share the screen? I think I'll share the screen if that's fine. Yeah, please do Thank that. you. Just give me a sec. Sure. Right. Yeah. So I'm here to represent IAPN, and it's a fantastic opportunity to talk about how we can collaborate and how the thoughts are very well aligned when we talk about Aahaar Kranti and what IAPN India is doing and has been doing for the past few years.
IAP in India is a multidisciplinary association. So we do believe in being all inclusive, where we have dietitians, nutritionists, pharmacists, physiotherapists, academicians, healthcare providers, nurses, researchers, as well as industry people coming together on the same platform to talk about and to work towards hopefully a malnutrition free country. Uh, and when we say malnutrition, we are not talking about malnutrition only in the community. We are also talking about malnutrition in the hospital. And that becomes a very important aspect of what malnutrition actually is. If we go back to the basic definition that WHO gave about health, it talks about being healthy, or a, a state of well-being with respect to the mental, the spiritual, as well as the physical aspect. And here, when we talk about nutrition from a very modern perspective, as my previous speakers emphasized, it is more about calories, it is more about how much of cereals and how much of carbs and everything that we are consuming. Nutrition is way beyond it. Nutrition needs to cater to the spiritual as well as the mental aspect. And that is what Aahaar Kranti is, and that is what IAPN also aims to achieve. We do, and we would look at a more traditional diet inclusion. I mean, the year of millets has been a fantastic initiative and a great drive to encourage traditional food items that we have, uh, ultimately being aligned worldwide, not just nationally as well, with respect to India, but internationally on a global platform. The first SDG itself is zero hunger, and that is what the aim finally is. We do believe in promoting research, education, training people to give the right nutrition advice across the life cycle. It's not just for people who are diseased, people who have an ill health. It is about diet. It is about what we eat. The word ahar itself is has a much greater meaning what maybe the word diet or nutrition does. So the right kind of ahar for all age groups, for all, across the spectrum, establishing a connect with stakeholders, as we saw, until and unless we talk to the people who are producing food, we cannot ensure the right kind of food gets delivered to the people. Improving food security. So it's about sufficient food, safe food, adequate food, affordable food, as well as reviving the traditional dietary patterns for all that are there today. Again, my heartfelt thanks to for inviting IAPN on this platform, and we do look forward to a great collaboration ahead. Thank you. Thank you so much, Dr. Mansi Patil. May I now request Ms. Sakshi Bharadwaj, please, to present the talk. Dr. Shreya Agrawal. Okay, fine. Let me welcome you, Dr. Shreya. Please. Namaskar, Dhanyavad Manvardhan ji, and my warm Namaskar. greetings to the chief guests, the entire Aahaar Kranti team, GIST, Yellow G, and all the lovely audiences here. So, I have been a scientist and researcher by training, but my calling has always been to become the spokesperson for the human body. Our liver, our heart, our eyes, perhaps they can't speak for themselves. So, that is where we need to convey that, okay, your body is trying to say something. Satvaj. Satvaj means born pure, born out of purity. We all have that innate capacity to be like a lotus, irrespective of the external circumstances, and stay happy and healthy. So the three pillars, science, traditions, which has a science with them, and the creative methods to convey this science and traditions to the common man. In Satvaj, we try to understand and
make people aware of the methods from Ayurveda and nature cure so that they can intervene and cure themselves by lifestyle and diet itself. We take a lot of corporate sessions and sessions for rural communities as well, along with the food label reading session so that people can understand where the industry is trying to fool with the common man. As Charak rightly said, Sarva manyat parityajya shariram anupalayet tad bhavehi bhavnam sarva bhava sharirinam. All the tasks and goals of life can be accomplished well only when the body is well. So the first duty is to take care of this human body and mind. Some of the glimpses of what we have been doing at various levels of communities is being shown in the video. In the next slide, please. Dhanyavad. So when we talk about health, Prakriti Swastha Sarve Swastha. If surroundings are not healthy, then we cannot be healthy. That's why working on waste management, waste segregation, and educating the rural and urban alike about taking care of the environment is an equal arm of Satwaj, because we cannot just dream of being we cannot dream of being secludedly healthy, like the concept of One Health. So with Aahaar Kranti, I believe that there are a lot of synergies to work, especially in the local area where I live, Jaipur and Rajasthan, and all the other organizations, NGOs or educational institutes where I work with. There we can definitely see how Aahaar Kranti concepts can be conveyed till the last mile, along with the creativity, because without creativity, we all are fascinated by movies because they touch our hearts. So in the same way, when information is combined with something that touches our heart, the results are long lasting. And of course, for research and content development also, we would see how we can work together. धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं आहार क्रांति के इस माइलस्टोन पर. टेक केयर, स्टे सेफ. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर श्रेया अग्रवाल जी आपका. और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे पैनलिस्ट वैद्य प्रशांत तिवारी जी का. प्लीज सर, आप प्रेजेंट करें. नमस्कार. आहार क्रांति, आहार जो कि मानव सभ्यता का पहला तत्व है और आयुर्वेद अनुसार आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ऐसे तीन जो परिप्रेक्ष्य हैं, उनमें आहार एक महत्वपूर्ण स्तंभ है. उस आहार क्रांति की इस पूरी टीम को मैं उनकी 2वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत आभार प्रस्तुत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया. और यहाँ पर उपस्थित राजेश कोटेचा सर को भी नमस्कार. नस्या नेशनल आयुर्वेदा स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन, जो कि 2008 में इसकी स्थापना जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हुई. हम 22 राज्यों में 5000 लाइफ टाइम मेंबर से भी अधिक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ कार्य कर रहे हैं. हमारा मूल उद्देश्य अभी इंडिपेंडेंट वैद्य और एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स और लीडरशिप डेवलप करना, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आयुर्वेद के माध्यम से उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना और साथ साथ में उनकी साइंटिफिक अप्रोच क्रिएट करके उन्हें प्रत्येक भारतीय आयुर्वेदिक छात्र एवं आयुर्वेद के से प्रेम रखने वाले सभी
लोगों तक आयुर्वेद को साइंटिफिक रूप से पहुंचाना, ये आयुर्वेद नस्या का एक लक्ष्य है। ये विज्ञान भारती का एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें आयुर्वेद के युवा एवं जो आयुर्वेद के छात्र छात्राएं हैं वो उसमें सम्मिलित होकर एकजुट होकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इसके पूर्व हमारे 2022 में जो कार्यक्रम थे उसमें हमने लगभग 31 कार्यशालाएं पूरे भारतवर्ष में ली, जिसमें हमने आहार भी उसमें एक मुख्य रूप से था, जिसमें हमने आहार किस तरीके से लिया जाए, आहार किस तरीके से कितनी मात्रा में लेना है, किस काल में लेना है, उसके साइंटिफिक वर्जन्स को हमने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बिहार में हमने 2022 में अभी एक अभी का कार्य लिए थे, और साथ ही साथ नाड़ी के माध्यम से और प्रकृति के माध्यम से किस तरीके से आयुर्वेद को प्रस्तुत करना चाहिए, आयुर्वेद वैद्य को किस तरीके से लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी कार्यशालाएं हमने ली हैं। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे ऐसी कार्यशालाएं और फ्लैगशिप इवेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य रहेगा कि आहार क्रांति की टीम के साथ नस्या कोलैबोरेट होके पूरे 22 राज्यों में अलग अलग स्तर पे कार्य कर सके। इसके पश्चात हम देखेंगे तो नस्या आहार क्रांति की टीम के साथ किस तरीके से मिलकर कार्य करने वाला है। उसमें हमने 4 सब डिविजन्स किए हैं। पहला जो है कि वो छात्रों के लेवल पे, दूसरा जो है रिसर्चर के लेवल पे, तीसरा प्रैक्टिशनर के लेवल पे, और चौथा जो हमारी जो सोसाइटी है, पब्लिक है, उसके लिए हमने सब डिविजन्स किए हैं। पहला सब डिविजन स्पोर्ट्स पर्संस के लिए किस तरीके से आहार लेना चाहिए, उन्हें आहार के क्या दृष्टिकोण होने चाहिए, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उन्हें कैसे रसों का सेवन करना चाहिए, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, कौन से काल में सेवन करना चाहिए, उनकी प्रकृति के हिसाब से उसे कैसे भोजन लेना चाहिए। पब्लिक सोसाइटी में भी हम लोगों ने डे टू डे आयुर्वेदा करके दिल्ली और हरियाणा ऐसे क्षेत्रों में लगभग 70 से ऊपर कार्यशाला हमने इसमें करी, और डे टू डे आयुर्वेदा हमारा सबसे बड़ा पब्लिक डोमेन इवेंट है, जिसमें हम पब्लिक अवेयरनेस में आहार क्रांति के साथ इस बार मिलकर ये प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को आहार की क्रांति के रूप में और आहार को किस तरीके से लें, उसके हर एक साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट को जान पाए। इस तरीके से हम लोग हमारा अगला विजन है कि हम आहार क्रांति के समक्ष नस्या की जो पूरी टीम है, हमारे हर एक कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से उसको क्रांति के रूप में पहुंचा पाए। यही हमारा लक्ष्य भी है, और ये आहार क्रांति की टीम के साथ जिस तरीके से हम कोलैब करेंगे, ये हमारा विजन है इसके लिए। धन्यवाद, नमस्कार, और पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रशांत तिवारी जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनका नाम ही उनका परिचय है, येलोजी राव मिरजकर जी। और आप सबको मालूम है कि जैसे डॉक्टर रश्मि कुलकर्णी जी ने अब तक के सफर के बारे में बताया कि आहार क्रांति का अब तक का सफर कैसा रहा, येलोजी राव जी हम सबको ये बताएंगे कि आहार क्रांति का अब के बाद से कैसा सफर रहेगा। आदरणीय येलो राव जी मिरजकर जी। नमस्ते मान बर्तन जी, आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री राजेश कोटेचा जी नमस्ते, सभी पैनलिस्ट और जो दूसरे सभी लोग ज्वाइन हुए उनको सभी मेरा नमस्ते। ओके, अभी ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो रश्मि जी ने बताया, तो भारत इज फुल ऑफ almost 140 crore population, and we have taken 2 specific pathways. One is how to prepare teachers who have access to 30 students and their parents together 90. So 1 crore teachers, 90 crore population plus their siblings. That is with the families where children are there going to school. On the other hand, there are many families where children may not be going to the school, either they don't have today or they are outgrown. For them, through NGOs, we would be liking to reach them with this awareness material that Rashmi ji earlier presented. We are already working with many of the organizations in this matter, and some because of the logistic reasons with having memorandum of understanding. Some we are working in the process of placing the memorandum of understanding. There are many organizations with whom we are already working, which Rashmi ji mentioned earlier.
Now, I want to share something slightly different to begin with, and that is our understanding today that of course we have to eat food for our nutritional nourishment, but more and more science now suggesting that can we eat food as medicine? And if not, medicine will become our food. We are all experiencing that from grassroots, rural areas, fresh food to the food that is purchased from the shelves, which has lots of chemicals, preservatives, and whatnot, and their consequences. We are slowly but for surely realizing, thanks to the advanced science, which is able to detect the minute quantities of chemical that is coming to our food and through it to us. Even the newly to be born child, which is still in the fetus form, is getting the chemicals through mother. Newly born child during breastfeeding also getting the chemicals into its body. Now, modern science is also showing lots of linkage to the brain and immunity related of our health. And this is all related to how we nurture our own friends, that microbes, gut microbes. I think overall, the Aahaar Kranti awareness is about we have to eat not only for nutritional fulfillment, not only as medicine, as food, but also we need to eat for our friends. Now, these are the 6 dimensions that we envision that realization of Aahaar Kranti translate into. Vidwan Bharat, that is the cognitive skills. Ayushman Bharat, that is extension of life. Ayurvedic Bharat, that is not only extension of life, but also being happy and healthy. And this is all needs to be supported by Krishi Pradhan, balanced production, organic farming, all those things natural. If these 4 pillars are fine, then Bharat definitely can become Samruddha. And whole world is looking for healthy diet, and that only India can provide at this point of time. So I mentioned about how we are going to reach 140 crores with the collaborations and the partnerships. There are many, many institutions, many dimensions, many ministries, many national research organizations, NGOs, other organizations we are currently working. Just to bring it to your attention that what do we want to do going future? We want to capitalize on today's position where we are, that we are the knowledge partner for the portion 2 from Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child. And through them, through this knowledge partnership, we will be training Anganwadi workers around the country. There's another knowledge partner opportunity that we have, that is Mission Utkarsh. 10 ancillary districts which are bottom of the pile in terms of the nutrition, we will be the knowledge partner, and we will also help to conduct the study, probably help analyze the data, and probably come with a recommendation for future. We are also working group of partner with C20, that is lifestyle of environment. And one of the important component in Aahaar Kranti is going back to our roots, that is Indian knowledge system, that is our Ayurveda. And we will be the partner organization for a conference that is happening in US in the month of October. It is organized by National Consortium of Ayurveda Medicine. So when we talk about the awareness, when we talk about taking the message, we just heard from Mansi ji, Shreya ji, as well as Prashant ji. Another panelist, Sakshi ji, could not join because she had a minor accident this morning and we have to skip her. We will try to bring her sometime. What we want to do is very simple. We need to have the basic material which Rashmi ji already has showed. Using that, we need to train teachers and the organizational volunteers for taking the message. It's a common minimum message that constitute what is general nutrition and what is the specific nutrition for me, and what are the benefits if I follow
the balanced nutrition in my life and probably in the future lives as well, because we know that we inherit a lot of things from our parents and to parents from grandparents. And also we need to be cognizant about the downside, that is, what are the repercussions, what are the impact that we might have. Some impact Rashmiji already mentioned. It may be diabetes, it may be blood pressure, it may be obesity, it may be cancer, tumor, something like that. All these are purely because of the nutrition. So this basic 5-degree aspects of realization is what the core of the Train the Trainer program. And obviously we need to influence in such a way that they will be impressed and motivated to practice not only in their life, but also able to take this message to students and the families. So this Train the Trainer program has to be done from the national to zonal, to state, to district, to taluka, clusters of villages and the villages, finally reaching family and the student. And India is a vast country. Prashantji mentioned that there are about 22 languages that we have, and we need to generate all these materials down the road. Only when we do it, we may be able to understand this aspect. So let us hear this particular video. It is coincidentally come to our attention, and let us see. Suppose, hypothetical question, I must announce that before that. Suppose you were made the Prime Minister of this country for 1 month. How will you change things? See, there are enough instruments in the democratic process. Making me or anybody a Prime Minister for 1 month is a cruel thing. Okay, for 5 years. Yes. So you admit that 1 month is not sufficient? No, because 1 month is a very cruel joke. It doesn't matter who comes to power for 1 month, he can't do anything in a nation as diverse as India. To get this nation moving, you need to understand this. You cannot move this nation with policy, with rules. You can only move this nation when anything that you want to achieve in this country, you make it a movement. If you do not make it a movement, if people do not emotionally connect to that, no rules, no policy is going to work in this country. It is only people who have been implanted from somewhere, who have not grown up with Indian people, who do not understand this. They think if you make a rule, everything is going to work. This is not Switzerland. If you announce on the notice board, everybody will follow. So, just to conclude, today what is the status? I am in America, so I'll use the dollars terminology here. And whole world is now looking for an alternate because they are realizing that who we are is what we eat. So at the end of the day, if we bring the awareness about the elements from Ayurveda, that is right, the life extension based upon the knowledge is the campaign. So I invite you, come, join us, and together let us make this Aahaar Kranti, Uttama Aahaar, Uttama Vichar awareness campaign successful. What is the measuring stick for the success? Bharat certainly will become Samruddha. It is already on its way to become globally leading one with principles in terms of making it Vishwaguru. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद येलोजी राव मिरजकर जी आपका। और आपकी बातें तो बहुत ही सार्थक होती ही हैं। उसमें एक बात रेखांकित अवश्य करना चाहूंगा जो आपने कहा कि अगर हमने अपने आहार को औषधि नहीं माना तो औषधि को ही हमें अपना आहार बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, जो कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव भी हैं। आदरणीय सर, आपसे आग्रह है कि हम सबको अपना वक्तव्य से मार्गदर्शन करें। मैं राजेश जी से ये भी विनती करता हूं कि अभी मई महीने में 31 जून 1 और 2 में एक ग्लोबल इंडियन
साइंटिस्ट एंड रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। इसका वेबसाइट का लॉन्च करने के लिए अनुमति जी, मैं दीजिए। माफी चाहूंगा यलोजी राव मिरजकर जी, मैं इनसे आग्रह करना भूल गया कि ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस को आदरणीय पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेजा जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होना चाहिए। आग्रह है सर राजेश जी, आप अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करें। बहुत शुक्रिया सर। राजेश जी, आप सबको नमस्ते। यलोजी राव जी, मनवर्धन जी और सभी पैनलिस्ट, आप सबको मेरा प्रणाम। आहार क्रांति के 2 वर्ष पूरे होने पर आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, एक प्रकार से सिग्निफिकेंट इसलिए है कि 2 वर्ष में हम जिस तेजी से, जिस गति से इसका एक्सपांशन हुआ है, वो हम सब लोग मिल करके देख भी पाए हैं। और मैं निश्चित रूप से, विशेष रूप से GIST, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स, जो विज्ञान भारती का उपक्रम है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, रश्मि जी को और यलोजी राव जी और आपकी टीम को, कि आप इसको बहुत दूर तक लेके आए। और मुझे पक्का विश्वास है कि जो थॉट प्रोसेस है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल सही दिशा में है और बहुत बड़ा काम हम लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे लिए एक प्रकार से ये सौभाग्य है कि आज के इस 2 वर्ष अपना आहार क्रांति का 2nd एनिवर्सरी के समय जो हम मिल रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, वेब मीटिंग के माध्यम से, उसमें पार्टिसिपेट करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके लिए आप सबको मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैंने देखा कि अपने जो रश्मि जी का उद्बोधन भी सुना, मैंने यलोजी राव जी का भी सुना, और अपने जो यंग पार्टिसिपेंट्स, पैनलिस्ट्स है, उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, राइट फ्रॉम स्टार्टअप टू द इनोवेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आहार क्रांति, ये सब विशेष रूप से इम्प्रेसिव है। और मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि जैसे यलोजी राव जी ने बताया कि आयुर्वेद, उन्होंने उसको डिफाइन भी किया। आयुर्वेद को जब हम इनके अर्थ की तरफ जाते हैं तो आयुषो वेद इति आयुर्वेद, ऐसा कहा है। जो आयुष का शास्त्र है, जो जीवन का विज्ञान है, लाइफ साइंस है, वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद में न केवल आहार की, लेकिन आहार के साथ प्रकृति की भी, प्रकृति के संरक्षण की भी, जो अभी हम जो मई के कॉन्फ्रेंस के जो अलग अलग टॉपिक्स देख रहे थे, मैं सोच रहा था कि आयुर्वेद में इन सब चीजों का बहुत विस्तृत विवरण उपलब्ध है। और हम ये एक सिंपल मैसेजिंग जो कि सबके पास पहुंच जाए और सबको एक अभियान की तरह, जिसको मिशन मोड में अभियान की तरह लेके जाए, तो ये मुश्किल काम नहीं है। जैसे हमने देखा पिछले वर्षों में कि एक बार स्वच्छता का अभियान हुआ। एक आग्रह है कि स्क्रीन पर पद्मश्री राजेश कोटेजा जी को लिया जाए, जो भी टेक्निकली हैंडल कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। पद्मश्री राजेश कोटेजा जी को फुल स्क्रीन कर दिया जाए। टाइम ऑन स्क्रीन जी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था अभी कि निश्चित रूप से किसी भी इस प्रकार के कार्य को हम मैकेनिकली पॉलिसी मेकिंग करके नहीं कर सकते, और उसको अभियान की तरह हम लोगों को लेना होगा। और उसके हमारे पास बहुत सफल उदाहरण है। मुझे लग रहा है मैं ठीक से ऑडिबल हूँ ना? मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ। जी, यस, आप ऑडिबल है जी जी, बिल्कुल।
जैसे पिछले वर्षों में हमने देखा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष मतलब उनके पास ये विशेषता है कि वो कुछ नया सोचते हैं, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और उनके पास इस प्रकार से जो भी सोचते हैं उसको कन्वर्ज करने की, मतलब जमीन पर उतारने की विशेष काबिलियत है, विशेष उनके पास ये भगवान ने शक्ति प्रदान करी है। तो उन्होंने एक बार ये ठान लिया कि हमें स्वच्छता के प्रति पूरे देश को सेंसिटाइज करना है। तो एक स्वच्छता अभियान चला और उसने पूरा देश में एक बिहेवियर चेंज लेके आए। और हम कभी देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो ये दिखता है कि लोग अब स्वच्छता के प्रति सेंसिटाइज हुए हैं। ऐसे उन्होंने टॉयलेट के ऊपर एक अभियान चलाया, करोड़ों टॉयलेट बने और उसको उन्होंने एक इज्जतगर नाम दिया। तो एक पूरा क्रांति हुई और उस क्रांति के भाग के रूप में ओपन डेफिकेशन लगभग अपने देश में निर्मूल हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। आप उसको जैसे एक बार सेकंड थॉट लेते हैं तो ध्यान में आता है कि ये ऐतिहासिक है। पूरे देश के लोगों के बिहेवियर को चेंज करना, उसको फैसिलिटेट करना और एक नई दिशा में लेके जाना बहुत आसान काम नहीं है। तो हमारे सामने ये दूसरा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण है, मैं तो आपको एक दो उदाहरण ही दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई उदाहरण है। तो ऐसे ही इसी तरीके से हम लोगों को ये आहार क्रांति के विचार को लेके जाना होगा। और वो मुश्किल काम नहीं है। जैसे प्रेजेंटेशन में एलोजी जी ने कहा, रश्मि जी ने भी कहा कि हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं। जैसे इन्होंने $1 ट्रिलियन बताया कि $1 ट्रिलियन इज स्पेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीजेस। लेकिन उन्हीं को हम यदि प्रिवेंट करना चाहें तो उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। ये मूल विचार जो है वो सबको समझ में तो आता है, लेकिन उसको कैसे लेके जाना। जैसे हमारे आयुर्वेद में एक विशेष शब्द है, इसको कहते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध मतलब हम जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम वो करते हैं। तो जैसे लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो वो जानते हैं। और जैसे अभी मैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात को रिकेप रेडियो पर आता है आजकल सुबह समाचार के साथ, तो आज सुन रहा था। आज सुबह सुबह ही के समाचार में ये एक रिकेप था कि उन्होंने धूम्रपान पर और तंबाकू पर उन्होंने किसी एक मन की बात में कहा होगा, उसका रिकेप था। तो उन्होंने कहा कि कोई यदि चेन स्मोकर भी होगा तो अपने घर में उनके परिवार के लोग स्मोक न करें, ऐसा वो चाहते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गलत है। तो वो जानना, उसके बाद भी उस चीज को करना, उसको आयुर्वेद में प्रज्ञापराध बोलते हैं। तो प्रज्ञापराध ये इंडिविजुअल स्तर पर भी हो सकता है, और प्रज्ञापराध कम्युनिटी के लेवल पर भी हो सकता है, प्रज्ञापराध पॉलिसी के लेवल पर भी हो सकता है। तो उसको कैसे हम करेक्टिव एक्शन लेकर के उसको हम सही दिशा में एक अभियान के रूप में ले जाए, ये प्रश्न है। पिछले दिनों में जीआईएसटी की टीम के साथ, येलोजी राव जी के साथ बहुत काम हुए, और इसमें एक प्रमुख कार्य जो हुआ उन्होंने मेंशन भी किया कि पोषण 2 में आहार क्रांति जीआईएसटी इज ए नॉलेज पार्टनर। ऐसे ही मिशन उत्कर्ष में भी आहार क्रांति इज ए नॉलेज पार्टनर। उसको आगे ले जाना होगा। और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों चर्चा चल रही थी माननीय सरकारेवाजी से, तो माननीय सरकारेवाजी ने भी मुझे इस विषय को उल्लेखित किया। उनका भी कभी येलोजी से चर्चा हुई होगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको आहार क्रांति को आप जरा लेके जाइए समाज तक, उसको अभियान के रूप में लेके जाइए। और मैंने कहा कि हम इसको येलोजी के साथ काम करें, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उनको बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक बहुत सिंपल मैसेजिंग बताना चाहता हूँ कि एज ए गवर्नमेंट वी आर विलिंग टू पार्टिसिपेट एंड टू कोलैबोरेट एंड टू मेक इट हैपन एज एन अभियान। तो उसको कैसे करना, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आहार क्रांति की टीम को कि आप हमें बताइए, मार्गदर्शन करें, और हम मिलकर के इसको बहुत बड़े स्तर पर एक अभियान के रूप में लेके जाना चाहेंगे। उसके लिए मेरा सुझाव ये है इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका हम फॉलो अप करेंगे, मेरा सुझाव ये है कि आयुष मंत्रालय, उनके साथ संबंधित सभी संस्थाएं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और राज्य सरकारें, हम लोग एक प्रकार से, और आहार क्रांति अभियान जीआईएसटी, सब लोग मिलकर के
इसको एक अभियान के स्वरूप में क्या हम इसको लेके जा सकते हैं, क्या किसी समय इसको लॉन्च कर सकते हैं, और इसको लॉन्च करके जैसे मोडालिटीज रश्मि जी ने ऑलरेडी बताई कि इसको हम नॉलेज डिसेमिनेशन अलग अलग स्थानीय भाषाओं में, और आपने योलीजी राव जी ने भी बताया कि कैसे हम 1 करोड़ शिक्षकों तक पहुंचेंगे, वहां से 30 करोड़ छात्रों तक पहुंचेंगे, कैसे 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे, और इसको एक बिहेवियर चेंज के रूप में लेके जाए। हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी भी है कि अभी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है, और भारत सरकार इसमें मिलेट के ऊपर काफी विशेष ध्यान दे रही है, और मिलेट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पर मिलेट लोग अपने भोजन में लेना शुरू करें, और उसको हम कॉमर्स के रूप में भी इसको हम एक प्रकार से कैपिटलाइज करें, उसके लिए बहुत बड़े स्तर पर प्रयत्न हो रहे हैं, और हम इसको जमीन पर भी देख रहे हैं। जैसे जैसे हमने देखा कि अभी सभी लगभग सभी 5 स्टार होटल्स में मिलेट रेसिपीज आर अवेलेबल। जैसे हमारा ओलिडा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उन्होंने एक कैंटीन शुरू करी जिसमें मिलेट के बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है। तो एम्स के डायरेक्टर जब उन्होंने विजिट करने आए तो उन्होंने कहा आप हमें भी बताइए, तो उनके वहां भी हमने एक कैंटीन शुरू करा दिया। तो एम्स में भी मिलेट कैंटीन शुरू हुआ। इट इज गेटिंग बिकमिंग अभियान, तो उसको उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आहार क्रांति अभियान को हम ले सकते हैं। और रश्मि जी ने सही बताया कि हम जब न्यूट्रिशन पिरामिड की बात करते हैं तो हम सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की बात करते हैं, या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे मसाले, उसके उपयोग, या इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ फूड, इसको हम भूल जाते हैं। आयुर्वेद में भी अष्टविध आहार विशेषताएं बताया है, 8 प्रकार की विधि बताई है आहार की। उसमें आहार होलसम तो होना चाहिए, आहार विविधतापूर्ण होना चाहिए, ये बताया, लेकिन साथ में आहार को मनपूर्वक लेना, मतलब आहार लेते समय और कुछ नहीं करना, शांति से चबा के खाना, उसके लिए विशेष वातावरण निर्मित करना, और अपने मन को आहार लेते समय उसके स्वाद लेते हुए खाना, षड्रस युक्त आहार लेना, ऐसे सब प्रकृति अनुसार आहार लेना, ऐसी सब चीजें बताइए। तो हम मात्र क्या ले रहे हैं उसके सिवाय क्या इसका एसिमिलेशन, मतलब अग्नि कैसा है, जठराग्नि के साथ उसको एसिमिलेशन की कैपेसिटी क्या है, उसके दीपन पाचन कॉन्सेप्ट का भी ध्यान दें। तो बहुत सारे इसके सब वेराइटीज को हम एड्रेस कर सकते हैं, और आहार क्रांति को एक रियल वैज्ञानिक क्रांति के रूप में पूरे देश में इसको लागू कर सकते हैं, जिसमें खर्च कहने को कुछ नहीं है। क्योंकि हम एक बार जब अपने कैसे भी परिवार हो, गरीब से गरीब परिवार हो या बहुत वेल टू डू परिवार हो, हम उनके साथ बात करके ये कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये बताना कैजुअली कि आपके भोजन में फल होना चाहिए, आपके भोजन में सब्जी होनी चाहिए, आपके भोजन में मिनरल्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, इट इज नॉट इनफ। हम लोगों को उनको ये उनकी भाषा में बताना होगा कि आप वेराइटीज ऑफ फूड से हम क्या क्या बताना क्या चाहते हैं। जैसे पिछले दिन हमने एक छोटा सा एक 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 विषय पर कार्य किया, तो पता चला कि पिछले 50 सालों में ही हम लगभग 30 से ज्यादा ग्रीन्स, सब्जियां एलिमिनेट हो गई हमारे फूड में से, जो हम कॉमनली खाते थे, जिसमें पुनर्नवा भी थी। ऐसी 30 से ज्यादा सब्जियां हम उसमें एलिमिनेट हो गई, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे करके मोनोटोनस डाइट पर जा रहे हैं। मैं चिकित्सक हूँ, और बहुत वर्षों तक, मतलब भारत सरकार में आने से पहले या उसके पहले कुलपति बनने से पहले मैंने जीवन भर चिकित्सा करी। तो चिकित्सक के रूप में मैंने कई बार देखा, जब पेशेंट से बात करता हूँ, उनका हिस्ट्री लेता हूँ, तो पता चलता है कि इसका एक कंपोनेंट जो इन्फॉर्मेशन का है कि व्हाट इज राइट न्यूट्रिशन, वो लोगों को पता नहीं है। क्योंकि उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो पाठ्य पुस्तक है, या तो जो न्यूज़पेपर में आता है। तो न्यूज़पेपर में जो आता है लार्डली, वो कॉपी कट पेस्ट होता है, वो जो अंग्रेजी अखबार में आया, इंटरनेट पर आया, और वो मिसमैच है। क्योंकि जो विदेशी अखबारों में या विदेशी मीडिया के जो चीजें बनती है, वो उनका ध्यान रहता है कि दे आर हैविंग देयर स्टेपल फूड एज ए रेड मीट और मीट, और मीट के आसपास फिर वो उनके बाकी चीजों की संकल्पना होती है। तो हम जब हमारे लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो मीट को हटा देते हैं, बिकॉज इट इज नॉट अलाइंड विथ अवर माइंडसेट्स। मीट को हटाने के बाद करते हैं तो बाकी चीजें बहुत मिसमैच टाइप की होती है।
और उसके अंदर जो कंपोनेंट बताते हैं वो भारतीय नहीं होते। जैसे हम ओट की बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि ओट इज नॉट ओरिजिनली एन इंडियन ग्रेन। तो ओट की बात करते हैं लेकिन जौ भूल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको हम निश्चित रूप से भारतीय संकल्पना में कैसे हम हमारे पास वेराइटीज ऑफ फूड हो, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। और बहुत अच्छा रश्मि जी ने शुरू में अपने प्रेजेंटेशन में एक अच्छा वो उन्होंने बताया कि आप संकल्पना करो कि आप जब छोटे थे अपने परिवार में बैठ करके भोजन कर रहे थे तो क्या क्या लेते थे। दिस इज राइट मैसेजिंग। और ऐसा करके 30, 40, 50 साल पहले हम जो लेते थे उसी को रिस्टोर करने से ही समस्या का हल हो जाएगा। क्योंकि हम जो जिस तरीके से गेहूं चावल के मोनोटोनस फूड पर पहुंचे हैं और एक प्रकार की संकल्पना की ज्यादा रफेज लेना चाहिए, ऐसा करके हम सलाद सब्जियां खूब खाते हैं और दालों को भूल जाते हैं। तो वेराइटीज ऑफ फूड में ये जो बैलेंस वाली बात है, फिर लोग हमें धमकाते रहते हैं, गलती से भी आपने ऑयल ले लिया तो डॉक्टर लोग भी धमकाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तुम्हारा, ऐसा करके। सो इसमें सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल कम्युनिटी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि उनके पास भी मिस इन्फॉर्मेशन, उनको जो बताया जाता है वो कहते हैं, और वो बताने का सोर्सेस उनके पास 30 साल पहले का है, वो कोई अपडेटेड जनरली होते नहीं है। वो अपने जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद दुनिया बहुत बदल गई, क्योंकि ये नॉलेज तो डायनेमिक है, लेकिन उनका वो स्टैटिक नॉलेज वही वही रहता है, उसी के आधार पर वो लोगों को बताते हैं। इज नॉट देयर फॉल्ट, but we have to disseminate the right information based on right scientific knowledge, which is happening by activity of GIST आहार क्रांति। और इस एक्टिविटी को, इस नॉलेज बेस को लार्ज स्केल डिसेमिनेशन करना और उसके लिए अभियान के रूप में इसका स्वरूप देना, इट इज द ओनली की। ये एक ही ऑप्शन है और उस ऑप्शन के आधार पर ही हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करना चाहिए, और उसके लिए आप येलो जी और रश्मि जी और GIST की पूरी टीम हमें मार्गदर्शन करें, हमें कैसे करना चाहिए उसको हम निश्चित रूप से करेंगे। एक दो विशेष जानकारी देना चाहता हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी एनीमिया पर हमने एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन पर काम किया, एक पायलट पर। बहुत इंप्रेसिव था कि एक पूरे स्कूल को काम करके उसमें 26% से लेकर के एनीमिया एक वर्ष में 1% पर आ गया बच्चों के इंसिडेंस में, ट्राइबल स्कूल में। तो अभी इसको हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर के और आहार क्रांति के साथ मिलकर के हम इसको 4 लाख पार्टिसिपेंट्स पर एक बहुत बड़ा अभियान के रूप में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एनीमिया पर करने जा रहे हैं। और उसमें सिंपल इंटरवेंशन को विजुअलाइज कर रहे हैं विद आहार क्रांति कॉन्सेप्ट ऑफ डाइटरी करेक्शंस एंड द्राक्षावले। तो ये एक आपकी सबकी जानकारी के लिए, जब इतना बड़ा सैंपल साइज पर बहुत बड़ा काम होता है तो इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक हेल्थ। दूसरा, ICMR के साथ भी हम इसी कैंडिडेट पर हम एक बहुत मल्टी सेंटर ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी के लिए। और असल में क्या है कि ये जो नरिशमेंट है, ये इस प्रकार के जो कार्य है उसको विजिबिलिटी जब मिलती है, जब इसको हम लार्ज स्केल पब्लिकेशन के लेवल पर भी लेके जाए, इसको डिसेमिनेशन के लिए हम ठीक प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाए। नहीं तो क्या होता है कि हम अच्छा काम करते हैं और करके फिर हम अपने आप में आपस में खुश होते रहते हैं कि इतना बढ़िया हो गया, ये हो गया, बट नथिंग ट्रांसलेट्स टू द एंड। और इसमें मुझे पक्का विश्वास है कि जो येलो जी ने बताया कि हम लोग मिल करके सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ट्रेन करना चाहते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और निश्चित रूप से हम इसको आगे कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ये जो हम जब तीसरे एनिवर्सरी पर हम इस प्रकार से मिलेंगे तो इसमें से बहुत सारी चीजें जमीन पर आई होंगी, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। और पुनः एक बार आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद। और जो आपने अलग अलग कंपोनेंट बताए, ये कंपोनेंट नीचे तक लेके जाने की जरूरत है कि आहार मात्र कुछ खाने का कंपोनेंट को कुछ लिया, उसके बदले उसका जो फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना। और उसमें ये जो विचार है, ये विचार एकदम नए हैं, कैची है। जैसे माइक्रोबियम के लिए आपने उसको अपना हमारे फ्रेंड्स के लिए भी ध्यान रखना, ये बताया, ये सब कैची चीजें हैं। इसको कैसे डिसेमिनेट करना, हम मिलकर काम करेंगे। तो मैं निश्चित रूप से, मेरी टीम भी यहाँ पर है और उसका फॉलोअप करेंगे। जो मैंने जो कहा, अभियान के रूप में इसको आगे ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध है। तो मैं भारत सरकार की तरफ से
एक प्रकार से आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, आप मार्गदर्शन करें। आपका खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार आदरणीय पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो रेखांकित करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। प्रज्ञा अपराध हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो चीजें हमें हमारे आहार के मामले में, जो चीजें हमारे लिए स्वास्थ्यकर ना हो, या फिर कोई ऐसा रहन सहन या कोई ऐसी शैली, जीवन शैली जो हम जानते हैं कि ऐसा नहीं करना है फिर भी हम करते हैं, तो उससे हम सबको बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं डॉक्टर राधिका जी का, आप आएं और आज के कार्यक्रम पर अपना वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय राधिका जी। धन्यवाद कंत सर. Namaste to everyone. This is a huge honor and a pleasure to represent Nutrition Society of India here in the forum of Aahaar Kranti. Aahaar Kranti, as we say, this is to revolutionize, or which acts as a revolution. And this revolution has been well taken up under the leadership of Dr. Yeloji sir and Dr. Rashmi ma'am. So first of all, I would like to thank our chief guest, Dr. Rajesh Koteja ji, Secretary Government of India, Ministry of Ayush. Sir, thank you for talking about the Ayush Shastra, that is the life science through Ayurveda. And definitely, as you mentioned, it has to be a campaign, or it has to be an abhiyan to bring about the behavior change. And thank you for highlighting what our Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, is doing through various initiatives such as the Swachh Bharat or the Toilet Abhiyan, which are basically the historical initiatives in the history of India. Also, you mentioned about the Pragya Aparad, which is very much prevalent at the individual, society and community level, and we definitely have to be mindful about it. Thank you for all your suggestions for involving the government stakeholders. And talking about beautifully, you have mentioned about the wholesome diet, a mindful eating, and also how we need to eat as per our body composition, and to bring back the diet diversity through local traditional food consumption. And this diet has to be, this transition which has happened where we are consuming this ultra processed food has to change, and we need to bring out our traditional Indian food system. Thank you so much, sir, for inaugurating the Global Indian Young Scientist Conference. And we are more eager to learn about your anemia initiatives and the trials in the future. Also, I would like to thank Dr. Rashmi ji. Thank you for walking us through this wonderful traditional Indian village where we are eating the traditional food and talking about the flavors of food which are nourishing not just our bodies, but also our mind and soul. And you definitely spoke about the malnutrition and the malnutrition connect. Thank you so much for that. And thank you again to Dr. Mansi ji, where you spoke about going beyond calories and improvement of food security and addressing the zero hunger through the collaboration with IAPEN. Thank you, Dr. Shweta. You mentioned about the triad of science, tradition, and creativity, which is absolutely essential. There is a need to bring out the education along with entertainment, and also how the Ayurveda can contribute to it. Thank you, Vaidya Prashant ji, for talking about the importance of Rasas, day-to-day Ayurveda programs which you are running through your initiative, and how it can collaborate with Aahaar Kranti. Thank you, Yeloji sir, where you mentioned about that food has to be our medicine, otherwise the medicine will only be our food. And you very nicely mentioned about Aahaar Kranti, how it is dealing with very base of gut microbiome, nutrition, immunity, and vigor. Thank you so much. And also thank you for talking about the trainer programs, which are the crux of Aahaar Kranti. Thank you so much for this. Thank you so much, Kant ji, for this wonderful anchoring which you have done. So with this, I thank also all the participants who have joined here and who are so inspired, as I can see through the chat box, that they all are very much energized and eager to participate in different initiatives of Aahaar Kranti.
And again, I thank Yellowji sir for giving me this opportunity to represent Nutrition Society of India, the oldest organization associated with ICMR, National Institute of Nutrition, to be a part of this initiative. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राधिका जी। हम सब जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना तभी साकार होगी जब देश का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, और देश का हर व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब पोषण की पोटली दुरुस्त होगी, यानी हम सबका जब आहार संतुलित होगा, और तभी कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को भी हम साकार कर पाएंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।